So last lecture we have studied regarding vaccination. Now vaccination का एक basic chart हम लोग देख लेते हैं. Okay, we all know that the kids soon after birth, all the kids are being vaccinated to prevent certain deadly diseases like polio, diphtheria, tetanus, okay, pneumonia, etc. So the vaccination schedule, the basic vaccination schedule that we have, vaccine is hepatitis B. Okay, the first dose is given at birth, then the second dose between first or second month, and the third dose at around 12 months, that is at 1 year. Then rotavirus vaccine. Okay, rotavirus vaccine is going to prevent the viral diarrheas. उसके भी 3 doses है. First dose at second month, second dose at 4th month of the child, and third dose we have given at 6th month. Okay, then DTP, diphtheria, tetanus. Diphtheria is a bacterial infection, tetanus is a bacterial infection, Pertussis, whooping cough जिसको बोलते हैं. सो ये तीनों बीमारियों का मिलके कंबाइंड वैक्सीन है, जिसका फर्स्ट डोज सेकेंड मंथ पे, सेकेंड डोज 4th मंथ पे एंड थर्ड डोज 6th मंथ पे दिया जाता है. इसका और एक बूस्टर दिया जा सकता है एट 1.5 years, दैट इज 15 to 18 months के आसपास. देन हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, हिब जिसको बोलते हैं, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी. दिस again vaccine is given around 2nd month, 4th month, and then around 1 year to 15 months. The next is pneumococcal vaccine. Pneumococcal vaccine is for pneumonia. The first dose at 2nd month, then 4th month पे एक dose, then 6th month पे एक dose, and 4th dose is around 12 months to 15 months. फिर inactivated polio virus, उसका फर्स्ट डोज एट सेकेंड मंथ, सेकेंड डोज एट 4th मंथ, थर्ड डोज एट 12th मंथ. फिर इन्फ्लुएंजा, सिंपल इन्फ्लुएंजा का भी वैक्सीन होता है. नाउ सी आउट ऑफ दीज वैक्सीन्स, हेपेटाइटिस बी, DPT, देन polio, these are all compulsory vaccines. But then rotavirus and pneumococcal are also nowadays being compelled to prevent the pneumococcal infection of the lungs and the rotaviral infections of the GI tract, okay, in kids. Then next to that is talking about the influenza vaccine is optional. Annually 1 dose दिया जा सकता है in patients who have higher susceptibility to catch this infection. Then MMR, measles, mumps and rubella, that is measles, gover जिसको बोलते हैं, rubella is also its type, and mumps जो parotid gland का infection है. These are all what we can say viral infections. इसका एक आता है booster, that is this, sorry not booster, इसका measles mumps का एक ही dose है, that is given at around 12 to 15 months. Then next to that is varicella. Okay, Varicella-Zoster is for chicken pox. उसका एक ही dose दिया जाता है roughly around again 12 to 15 months. Then chicken pox के लिए again it is an optional vaccine. You can get the infection and develop a lifetime immunity, or you can get the vaccine, slight reaction हो सकता है, otherwise नहीं भी होएगा, and you can develop the immunity. Hepatitis A is again optional. उसके 2 doses around first and second birthday पे दिए जाते हैं. Okay, then next is this is the basic vaccination chart to help you know what are the basic vaccines given around what time. So generally you can see before 2 years of age the major vaccines are being completed, and after that the booster doses are given to the kids. The boosters are enhancing the action of the vaccine which was previously given. Fine, till 5 years of age these boosters are there. Then at 7, roughly after 2 years, directly around 5 years it is, then 7 years, and then around 10 year one TT booster is there. Okay, so this is in short regarding vaccination. Now vaccination के बारे में ही some extra points we can study. So safety of vaccinations. See, vaccines are generally safe, okay, because they are tested. They are not directly experimented, okay. They are tested before using them on the humans. So they go around many rounds of study. मतलब उनको डिटेल में स्टडी किया जाता है कि इसके कॉम्पोजिशन क्या है, उसका रिएक्शंस क्या हो सकता है. एनिमल्स पे और फिर ह्यूमंस पे उसका एग्जामिनेशन किया जाता है. रिसर्च इज डन बिफोर दे आर यूज्ड ऑल ओवर द जनरल पब्लिक. देन साइड इफेक्ट्स आर जनरली रेयर, एंड
अगर हुए भी तो बहुत माइल्ड होते हैं. वेरी रेयर केसेस दे माइट शो एलर्जिक रिएक्शंस, सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस इन हाइपरसेंसिटिव पेशेंट्स जनरली और इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उनमें वैक्सीनेशन से रिएक्शन आने के चांसेस आर हाई. ओके, देन vaccination and pregnancy. We need to know about this also. This is some additional information. Vaccination can be done during or before pregnancy, मतलब before getting pregnant also and during pregnancy also. Some of the vaccines are used before pregnancy and not during pregnancy, and some can be used during pregnancy also. It is helpful to protect the mother from various infections and also the baby, because from mother to child the infection may pass. So now MMR वैक्सीन जनरली जो होता है वो 1 month बिफोर प्रेगनेंसी दिया जाता है. सो इफ इट इज़ अ प्लान प्रेगनेंसी, वेन एवर दे आर प्लानिंग जस्ट प्रायर टू चांसेस ऑफ कंसेप्शन, वी कैन गिव 1 month प्रायर. देन ये किससे बचाएगा, तो रुबेला से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिकॉज रुबेला से मिसकैरेज के चांसेस हाई होते हैं एंड सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स बच्चे में होने के भी चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ मीजल्स एंड रुबेला. नाउ सी दिस थिंग इज कि जनरली बचपन में MMR वैक्सीन्स लिए रहते हैं, सो द मदर ऑलरेडी इज वैक्सीनेटेड इन हर चाइल्डहुड, सो देर इज नॉट नीडेड मच वैक्सीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. बट इफ वी डोंट नो द हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन इन दैट मदर, देन इट कैन बी यूज्ड एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन. देन नेक्स्ट टू दैट इज वैक्सीन्स जनरली कंटेन्ड द किल्ड फॉर्म या इनएक्टिवेटेड फॉर्म द वायरसेस, वो वाले हम लोग प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नॉट द लाइव वर्जन्स. ओके, सो इनएक्टिवेटेड वर्जन्स में आता है फ्लू शॉट, वी कैन बी गिवन, या TT वैक्सीन इज जनरली गिवन बिकॉज वी वांट टू prevent or avoid the chances of tetanus, because the mother might need some surgery or whatever, तो इंस्ट्रूमेंट्स के कांटेक्ट में आ सकते हैं. सो दैट्स द रीज़न इट्स ऑलवेज बेटर टू गिव अ TT वैक्सीन एज अ प्रिवेंटिव. Then TDAP, that is tetanus, diphtheria and attenuated pertussis का वैक्सीन है, ये भी दे सकते हैं. Then vaccines that contain live viruses are not recommended for pregnant women. For example, chickenpox vaccine या MMR before pregnancy दे सकते but not during pregnancy. So this is regarding vaccination during pregnancy. Now the